Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about post-traumatic stress disorder (PTSD) nursing care plan, and through this video, you learn this care plan very easily. And this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान यहाँ लर्न करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको पीटीएसडी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फ्रेंड्स हम नर्सिंग केयर प्लान में यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे यहाँ पर स्टेप्स होंगे। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखते हैं यहाँ पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस disorder is a mental health disorder that some people develop after they experience or see a traumatic events. Next, post traumatic stress disorder can happen after a person experiences a traumatic event causing them to feel fearful, shocked or helpless. It can have long term effect including flashback, difficulty sleeping and anxiety. Next, the traumatic events may be life-threatening, such as combat, a natural disaster, car accident, sexual assault, but sometimes the event is not necessarily a dangerous one. तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान्स ऑन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे, जिसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट हो गया पर एंजाइटी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग एंजियस, और ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर टेकिकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पैनिक अटैक, रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन। आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइटेड द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में एंजाइटी रिलेटेड टू थ्रेट और हार्म सेकेंडरी टू पीटीएसडी, गोल हो गया पर टू रिड्यूस एंजाइटी। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स हमको क्या क्या इंटरवेंशन पेशेंट को देना है जो जिससे कि हम हमारा जो गोल हो वो अचीव कर सकें। रेशन होगा मीन्स रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को दे रहे जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स पेशेंट पे अप्लाई करना। तो इस तरह से देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं डिटरमाइन द पेशेंट्स एंजाइटी लेवल। रेशन होगा टू ऑब्टेन ए बेसलाइन लेवल ऑफ एंजाइटी टू एड विद द प्लानिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर डिटरमाइन द पेशेंट्स एंजाइटी लेवल। नंबर सेकेंड identify the source of anxiety। रेशन होगा encourage the patient to discuss what causes their anxiety। implementation होगा source of anxiety identify। नंबर थर्ड देखते हैं encourage the patient to openly express their emotions। रेशन होगा display empathy and positivity allowing the patient to express their anxiety। implementation होगा patient encouraged to openly express their emotions। नंबर फोर्थ encourage relaxation techniques। relaxation techniques include deep breathing, yoga and meditation। रेशन होगा relaxation techniques induce deep breathing, yoga and meditation। implementation होगा encourage for the relaxation techniques। next assure the patient that she or he is not alone by asserting presence, communication, touch, permission from the patient and a positive approach। रेशन होगा to provide the patient affirmation and support। implementation होगा assure the patient। नंबर 6 देखते हैं administer medications as ordered। benzodiazepine are the most common class of medication administered to reduce anxiety।
रेशन हो गया पर बेंजोडाइजिपाइन आर द मोस्ट कॉमन क्लासेस ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस एंजाइटी. इम्प्लीमेंटेशन होगा मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड. नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7. एनकरेज द पेशेंट सपोर्ट सिस्टम. Determine what kind of personal support the patient has home. Encourage support group along with their home support system. Reason होगा encourage support group along with their home support system. Implementation होगा patient support system evaluated. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं यहाँ पर. केयर प्लान नंबर फर्स्ट का एवल्यूशन. नाउ एंजाइटी रिड्यूस्ड, जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया है थ्रू डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का जो केयर प्लान सेकंड होगा इंसोम्निया पर देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में. Subjective data: patient says that I am feeling difficult in sleeping, focusing and recalling information. Objective data होगा sleep deprivation, general exhaustion, weakness, restlessness. Nursing diagnosis होगा insomnia related to difficulty maintaining normal sleep secondary to PTSD. गोल होगा to maintain normal sleeping pattern. Intervention देखते हैं first assess the patient's sleeping pattern. रेशन होगा इट हेल्प इन द इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा स्लीपिंग पैटर्न असेस. नंबर सेकंड असेस द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ देयर स्लीप इश्यूज एंड डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशन टू मेक द relief and healing process more attainable. रेशन होगा these information will be used to decide the best of interventions for the patient. Implementation होगा patient understanding assess. Number third encourage the patient to avoid big meal, coffee or smoke before bedtime and inform them of the proper dietary and fluid intake guidelines. Rational होगा पर for the patient is the best to avoid eating large meals right before bedtime. Caffeine-rich beverages such as coffee, tea, chocolate, and cola affect the neurological systems. This could make it difficult for the patient to unwind and sleep. Implementation होगा patient encouraged to avoid big meals, coffee or smoke before bedtime. Number 4 देखते हैं encourage the patient to perform relaxing and calming activities. Example taking a warm bath or listening to peaceful music before bedtime. Rational होगा these activities induce sleep. Implementation होगा patient encouraged to perform relaxing and calming activities. Number 5 provide calm and quiet environment. Rational होगा helps in sleeping. Rational implementation होगा calm and quiet environment provided. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवल्यूशन स्टेप्स. देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड का एवल्यूशन यहाँ पर होगा नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन. मीन्स जो गोल था टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न वो हमने अचीव किया है. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड हो गया यहाँ पर फेयर फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं एजिटेशन, अलर्टनेस, टेंशन, इंक्रीज हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज परसिपिरेशन एंड डायलेटेड प्यूपिल्स. आफ्टर राइटिंग दिस डाटा वी राइटेड द डायग्नोसिस. डायग्नोसिस होगा पर फियर रिलेटेड टू परसिव थ्रेट और डेंजर सेकेंडरी टू PTSD. गोल होगा टू रिड्यूस फियर. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन. इंटरवेंशन फर्स्ट हो गया पर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एसेस द टाइप ऑफ फियर एज डेमोस्ट्रेटेड बाय द पेशेंट. रेशन होगा दिस reassures the patient and show them that their concern and being heard. Implementation होगा open ended question asked. Number second observe for the sign of fear. Non-verbal expression can indicate they are experiencing fear. रेशन होगा physical signs such as an increased heart rate, tachypnea, dyspnea, sweating and agitation are sign of fear. Implementation होगा sign of fear observed. Number third examine the patient's demeanor or coping strategies. रेशन होगा may serve as a basis for determining the appropriate intervention and care plan. Implementation होगा coping strategies examine. Number fourth deliberate the patient on the process and current situations, help him or her identify reality from perceived threat to well-being. रेशन होगा to promote assurance and maintain the patient is. Implementation होगा deliberate
the patient on the process and current situation. Number 5, discuss the reality of the situation, inquire about what the patient's fear is. Risk look acknowledging what can and cannot be changed can help the patient feel in control. Implementation discuss the reality of the situation. Number 6, assure the patient's feeling by saying fear is normal to a given circumstances and situation. It gives a comprehensible view of fear and solution to resolve the problem. Implementation assure the patient's feeling by saying fear is a normal response to given circumstance. Number 7, ensure the patient is in a calm and safe environment and reassure them repeatedly that they are safe. Calm and safe environment induce relaxation and improve the patient's well-being. Implementation ensure the patient is in a calm and safe environment and reassure them repeatedly that they are safe. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation हो गया पर नाउ fear reduced. जो गोल था to reduce fear वो हमने अचीव किया है by different interventions. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3. देखते हैं नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 तो क्या हॉपलेसनेस देखते हैं. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज that I am very hopeless and objective data here decrease appetite, decrease reactivity to stimuli and inability to take the initiative. After writing these data, we write the nursing diagnosis. Nursing diagnosis का hopelessness related to inability to control the situation. Second to PTSD, look at to maintain sense of hope and control. Intervention with the first examine the patient comprehension of the situation as well as his or her self-confidence and abilities. Realizing the patient's understanding of the situation helps identify area of concern. Implementation examine the patient comprehension of the situation. Number 2, examine the patient's demeanor including his or her willingness to eat, sleeping habit or his or her general well-being and routine. Loss of hope may reveal deviation from the patient's normal behavior pattern. Implementation examine the patient's demeanor. Number 3, encourage the patient to have a good mental attitude, dissuade negativity and prepare or her for unpleasant or unexpected outcomes. Attaining the essential information and data on the patient's current situation helps the delivery that the information is being kept from them. Implementation encourage the patient to have a good mental attitude. Number 4, assist the patient in evaluating his or her options and setting an attainable goal. To establish a sense of hope in the patient. Goals should be mutually agreed upon to ensure that they are attainable. Implementation of patients assisted in the setting attainable goal. Number 5, recommend self-help groups to patient. It allows the patient to recognize the support of the other, thereby increasing his or her hope and self-esteem. Implementation हो गया पर recommended self-help groups to the patient. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 का एवोल्यूशन. तो यहाँ एवोल्यूशन होगा हमारा सेंस ऑफ होप एंड कंट्रोल मेंटेन. जो हमारा गोल है टू मेंटेन सेंस ऑफ होप एंड कंट्रोल वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को हमने प्रोवाइड किए हैं. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD. देखते हैं पर केयर प्लान नंबर 5 होगा पर इनफेक्टिव कोपिंग. तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा patient verbalize about the inability to perform activities of daily living. Objective data inability to cope with reality, exhaustion, self-destructive habits such as binge drinking or use of alcohol, somatic symptoms, diarrhea, headaches, ulcer, changes in behavior and or communication. Nursing diagnosis होगा पर ineffective coping related to situational crisis. Secondary to PTSD गोल होगा the patient will efficiently cope in the event of the unexpected events. Intervention देखते हैं. First, assess the self-destructive habits. Patients with the PTSD may turn to unhealthy habit as a way of dealing with their trauma. Implementation का assess for the self-destructive habits. Number 2, examine the patient's perception of the effective coping. Regional cultural opinions of the normal and abnormal coping behavior may influence the patient's behavior. Implementation
Examine the patient's perception of the effective coping. Number third, observe the patient for sign of ineffective coping and assess its causes such as sadness, low self-esteem, and lack of problem-solving abilities, a lack of support, or a recent changes in the living circumstances. Rational to better grasp the patient's current circumstances and assist the patient in coping efficiently, situational elements must be addressed. Implement assessed, observe the patient for sign of ineffective coping. Number 4 देखते हैं make communication and employ empathic listening. Rational when the patient's feelings are acknowledged and understood, it create a positive supportive environment that aid in the coping. Implement effective communication made and employed empathic listening. Number 5, encourage positive self-talk and self-care. A traumatic event may harm the patient's confidence. Implement encourage a positive self-talk and self-care. Number 6, through continuity of treatment, establish a working connections or relationship with the patient. A long-term partnership or events, maintaining a relationship with the patient over the times builds trust, lessens feeling of loneliness, and may make it easier to cope. Implement therapeutic relationship maintain. Number 7 देखते हैं promote the patient self awareness relating to the his or her positive attributes. A patient may be unable to perceive their strength when they are in a crisis. Implementation promoted for self awareness. Number 8, refer the patient to a therapist. It would also allow the patient to acquire problem solving and coping skills. Implementation referred the patient to a therapist. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं यहाँ पर evaluation में तो केयर प्लान नंबर 5 का यहाँ पर evaluation होगा. How patient effectively cope with the post traumatic stress situation. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं. तो हमने यहाँ पर वीडियो में टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर लर्न करें हैं, जिनको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर PTSD डिसऑर्डर के अंदर हम राइट डाउन कर सकते हैं. तो आप वीडियो के साथ से आसानी से अपने यहाँ पर नोट्स ले सकते हो, अपने असाइनमेंट प्रिपरेशन करते हो और एग्जामिनेशन प्रिपेयर को आप आसानी से अपना कंप्लीट कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.